Hello everyone, welcome to iExamB. So my name is Kailash Sir and I welcome you all in this platform of iExamB to make your preparation 50% faster. So students, we started yesterday the preparation series for the NSC examination which is tentatively scheduled for the 5th of January, and I hope you all are preparing very well for this examination. Okay. So again yesterday I also received many requests related to the sir, we should discuss more number of questions. So again I told you that there are limitation when we are doing videos, so we can have ultimately if I will take the session for 3 to 4 hours, but then also I will not able to take those much of questions which you can solve if you are doing the mock test. So that's why I again and again focus on doing mock test rather than the videos. Okay, although you can watch the videos also to understand the context basically, but for practicing more and more question you have to attempt the mock test. Okay, and there may be a number of sources. Exam is also providing the quality mock test, and you can check our mock test package also. We are providing the full length mock test, chapter test, and in this chapter test also there are different topic of tests are available, and all the agriculture marketing related special tests we are providing in the mock test series also. Okay, so you can avail this facility also. Now we'll start our today's session. Our today's session is all about the agriculture marketing. So again, first of all, you need to understand what is the marketing. So marketing is defined by the various marketeer. Okay, earlier when I was in graduation, so maybe I have the different kind of understanding, but now because I am pursuing MBA, so I got to know about the various aspect of marketing is not only the marketing thing. Okay, it may be the creation of utility, creation of demand, and also how we can target the right customer. Okay, all these comes under the marketing, and if it is related to the agriculture, then it is agriculture marketing. So for any PSUs, public sector units or public sector undertakings means these are the enterprise of government of India. So these are what enterprises. Similarly, the banks, है ना, government banks. So these are the enterprises. Similarly, the ये क्या है? NSC. This is also the government of India's PSU. तो यहाँ पे भी क्या, they have their product. What is their product? Seed. तो उसको farmer तक पहुंचाना है. And again, in the market there is competition. Private seed companies are there. Other seed companies are there. They are also competing. So ऐसे में कैसे marketing करनी है? So again, it is one of the important. That's why this topic is again important for all the examination wherever the marketing is required or wherever uh, organization is offering any product or services. Okay, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. So let us start with the first question. Which of the following is not considered as a factor of production? Why the factor of production is important? Because कोई भी enterprise में कोई भी एक product होगा, उसको produce करने के लिए 4 factor of production होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए. तो वो factor of production क्या है? Land है, labor है, capital है, and entrepreneurship है. Technology is not the factor of production. Maybe आगे चल के हो सकता है, but technology can assist, है ना, ये factor नहीं है. So this is the factor of production. Okay, this you need to understand. Moving forward, so these are the classification of factor of production: land, labor, capital, and entrepreneurship. These are the 4 factors of classification, factor of production basically. Then now the next question is, why is marketing considered as an essential part of overall production process? Okay, why marketing is considered as an essential part? So let us read the question options first. Marketing add cost to the product, हो सकता है. Marketing reduces the need of utilities, नहीं, ये तो नहीं हो सकता. Need of utilities नहीं, it is creating the utility. Marketing increases the production utility, maybe may not be. Marketing is unrelated to the production process, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. Marketing completes the production process by creating utility. So this is the important or correct answer here. So marketing is basically marketing completes. हम कहते ही कभी marketing complete होता है? Marketing complete तब होगा जो हमने production किया है, जो भी हमने produce किया है वो उसके right कस्टमर या फिर टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाए. और टारगेट कस्टमर तक कब पहुंचेगा? जब उसको पता होगा कि वो उसकी रिक्वायरमेंट है या उसको नीड है. सिंपली मैं आपको बताऊं क्या होता है. जरूरी नहीं है कि नीड हमको जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है उसके बेसिस पे हम समझे. आप जस्ट ये समझिए, आज 31st है ना. 31st को आप सभी को पता है, आपके फ्रेंड्स भी घूमने होंगे, आपके दोस्त सीनियर वगैरह घूमने गए होंगे. लोग आप देख रहे होंगे कहाँ गए हैं, सभी हिल स्टेशन पे गए हैं जहाँ पे स्नोफॉल है. सो स्नोफॉल है, सो हर किसी को लगता है यार यहाँ पे मुझे भी जाना था. सो ये क्या है? दिस इज, अब ये क्या हुआ, आपको जब ये लगा कि मुझे भी जाना चाहिए था, तो ये की यूटिलिटी क्रिएट हुई है. ओके, अभी कब सेटिस्फाई होगी? जब आप वहां पे जाएंगे, मे बी इस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, है ना. बट ये क्या हो गया? काइंड ऑफ मार्केटिंग है. ये किसके थ्रू हुई? सोशल मीडिया के थ्रू. सिमिलरली केदारनाथ सबको जाना है ना, क्योंकि वहां जाके रील बना के हर किसी को लगता है यार यहाँ मुझे भी जाना है. अभी जब तक रील नहीं देखी थी उससे उस तब तक था कि नहीं था ये पता नहीं, बट रील देखने के बाद हर किसी को पक्का हो जाता है कि वहां जाना है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. एंड अगेन who is playing the important role? Marketing is playing the important role. Okay,
Then transfer of ownership is the example of which utility. Transfer of ownership means from one uh, person to the another person. If we are changing the ownership, इसको हम क्या बोलते हैं? It is the transfer of ownership is the example of which utility. So let us understand it first. The utility. What is utility? Utility is kind of necessity. You can understand like that. Okay. So ownership is means like something I possess. Now, if I giving it to some other person, or if you are purchasing from me, so basically what is happening? Transfer of ownership is happening. Possession is changing. Earlier, I was having the possession of that particular product. Now you are the uh, holder of that particular product. So it is what? It is the possession utility. Means the possession is getting changed. Let us understand it properly. Okay. There are four type of utility basically. One is the form utility, another is the place utility, third one is the time utility, and fourth one is the possession utility. Now you understand the utility. Utility is means basically a need, requirement, or we can say the desire or whatever. Okay, or it is something which can fulfill your demand. Okay, so the utility is form utility means just imagine you have the raw tomato. Okay, and you have changed its form to puree or sauce. Okay, so when you are changing the form, the utility is created. Again, earlier you might be not consuming the raw tomato, but definitely with any dish or with any snacks, definitely you will use the sauce. Okay, so it is what we have increased the demand, or we have created the utility by changing the form. Okay, similarly the place utility. Just imagine Maharashtra, they are producing the tomato, but they are not producing the but the consumers, or we can say farmers, are not producing tomato in the Jammu and Kashmir. By transporting them from Maharashtra to Jammu and Kashmir, what we are doing, we are creating the place utility. Then time utility. Tomatoes are harvested in the month of, we can say, January or February. Okay, and we are also consuming them in the August. How? By storing them in the cold storage. So by storage, what we are doing, we are creating the time utility. Mm, place utility is created by the transportation. Okay, transportation. So this you have to remember. Similarly, possession. So possession utility, how we are changing the possession? By the sales. When the buying and sales, we can say we are changing the possession utility. Farmer is growing something, so farmer is having the possession of that particular crop. When farmer is selling to the trader, so now who is having the possession? Trader is having the possession. So it is the possession utility. So by the buying and the selling activity, possession utility get changed, or we can say possession utility increased or added. Now the next question, the additional utility derived by an individual by the consumption of one or more unit of commodity. So what they are asking, by the consumption of one more extra commodity, how much additional utility you are driving, means how much additional satisfaction you are drawing. Okay, so ये सिंपली वो बात हो गई कि आपने एक पिज्जा का एडिशनल पीस खाया तो आपको कितना सा एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुआ. सो उसको किस टर्म में बात की जाती है? तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म में बात की जाती है. ओके, ये याद रखिएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, चाहे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात हो. सो द लॉ ऑफ डिमांड शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स यूनिट. ओके, क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ डिमांड इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू इट्स यूनिट ऑफ प्राइस. किसके साथ? प्राइस के साथ. मतलब सिंपल सी बात क्या है, अगर प्राइस कम है, सो वी विल डिमांड more commodity. If the price will increase for the same commodity, the number will reduce. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे quantity demanded reduce होगा. So it is what the inverse relationship. If the price will increase, quantity demanded will decrease. This is the simple relation. Okay, so here how it is related, it is related to the price. Okay, then there are some exceptions, okay, of the law of demand, because many a time what happen now, when we start studying, and specifically in the time of examination, जब एग्जाम हम कर रहे थे तो हमें सवाल आता मन में कि हम हर जगह तो ऐसा नहीं करते. कई जगह तो प्राइस बढ़ता रहता है, फिर भी हमारी डिमांड बढ़ती जाती है, या फिर हमारी डिमांड उतनी ही रहती है. जैसा एग्जांपल है गिफ्ट गुड्स. चीपर गुड्स हैं, वो सस्ते भी जाते हैं, हम तब भी नहीं खरीदते हैं, है ना. आप जनरली देखोगे कि कुछ हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स है, अब वो कितना भी सस्ता हो जाएगा, वी वी आर नॉट
गोइंग टू परचेज देम, है ना। तो वो क्या है, गिफन गुड्स है। सिमिलरली स्टेटस सिंबल गुड्स है, गोल्ड है, कार है, अभी जिसको गोल्ड खरीदने जाना वो थोड़ी सोचेगा क्या रेट है, या फिर जिसको रॉल्स रॉयस खरीदनी है वो सोचेगा कि पेट्रोल का क्या रेट है। सो दीज आर द एक्सेप्शन। सिमिलरली द फैशन रिलेटेड गुड्स, व्हेन यू हैव टू परचेज द लिवाइस की जीन्स, तो फिर आप ये थोड़ी सोचोगे थोड़ा सस्ता कर दो, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दो, है ना, या महंगी हो जाएगी तो मैं कम लूंगा। वहां पे तो देर इज नो रिलेशन। एंड वन मोर थिंग इज फियर ऑफ शॉर्टेज। व्हाट वी आर सेइंग, क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। मतलब सिंपली सी बात क्या है कि अगर प्राइस, किसी भी चीज की प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। बट क्या होता है, फियर ऑफ शॉर्टेज, क्वांटिटी तो डिमांडेड, हम कह सकते हैं कि प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी, क्यों, क्योंकि कल के दिन कहीं पता चला मिले ही ना। सो दिस इज व्हाट, फियर ऑफ शॉर्टेज। वन थिंग इज इग्नोरेंस, किसी ने ठग दिया। नेसेसिटी, फूड एंड मेडिसिन, so these are things which are kind of constant, that's why we also call them inelastic demand। क्या मतलब है, मेडिसिन चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सिमिलरली फूड, ओके। सो दीज आर द एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स। Try to understand whatever I am telling you in my videos are important, and if you will check my previous videos of agriculture marketing, I have discussed these questions also, but these questions were there in the examination also. So you need to understand what is important and what is not, and what may be asked in this examination. You can check in the previous year NSC examination, you can check this year CCI examination or any other examination. These are the core of agriculture marketing, okay. The case of perfectly elastic demand, the demand curve will be, so again, elasticity of demand. Elasticity of demand is quantity demanded upon price, okay. This we are discussing, or we can say that कोई इसको QD लिखता है, कोई DQ लिखता है, जैसे भी लिखता है आप उसको समझ लीजिएगा। बट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज this quantity and price का inverse relationship है। So what we are saying in the perfectly elastic demand, the demand curve will be, वो क्या होगा, ये simple पूछा है। Now you can see here perfectly elastic demand, elasticity of demand is infinite, elasticity of infinite demand कब होगी, now you can understand the relation। ये quantity है, आप मुझे ही बताइए comment box में, you have to answer this in the comment box। You tell me when the price will zero or when the quantity demanded will zero। आप मुझे दोनों में बताइए कि अगर प्राइस जीरो होगा तो ये इलास्टिसिटी डिमांडेड जीरो होगी, या क्वांटिटी डिमांडेड जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट होगा। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इलास्टिक डिमांड का, इलास्टिक डिमांड में हम कहने का मतलब क्या है, प्राइस इज सेम, देर इज नो चेंज। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द चेंज इन प्राइस। देर इज नो चेंज इन प्राइस बट द क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग। सो इट इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। जस्ट अपोजिट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इट इज लाइक दिस। मतलब क्या है, क्वांटिटी विल रिमेन सेम वेदर द प्राइस इज P1 और P2। प्राइस कितना भी चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन सेम। सो दिस इज द केस ऑफ फूड एंड मेडिसिन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड जस्ट before this in the exception of law of demand. So it is the inelastic demand. So now you can understand, okay। ये तो हमें सिंपल ऐसे समझ आ जाता है ना कि हम न्यूमरेटर जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट आएगी, या डिनोमिनेटर जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। बट एक चीज आपको यहाँ पे समझना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द चेंज ऑफ प्राइस। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप, कि perfectly elastic is when the price is constant, there is no change in its price, means it is zero and the quantity is getting changed, so it is infinite। And here what is happening, there is change in price but there is no change in quantity demanded। यहाँ पे there is change, है ना, there is change but there is no change in quantity demanded, so it is the inelastic demand। So it is related to agriculture, commodities and medicines, okay। So this is the elasticity of demand, you must study this thing। Now the question is, according to the law of equimarginal utility, law of equimarginal utility is again important for a marketeer। A consumer maximizes total utility when, देखो हमेशा क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर, if the consumer is purchasing one type of goods ना, if there is a similar type of good, consumer will not at all purchase it, है ना, वो कभी उसको परचेज नहीं करेगा। बट क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हम थोड़े से कैलकुलेशन लगाते हैं। कैसे हम कैलकुलेशन लगाते हैं, लाइक अगर मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ बिस्किट लेकर आना, और मेरे पास टारगेट है, आई हैव टू परचेज बिस्किट ऑफ 100 रुपीज, ओके। सो एंड माई इन माई माइंड आई एम वेरी मच फिक्स्ड कि आई विल बाय द बिस्किट्स ऑफ गुड डे। अब मैंने देखा वहां पे कुछ एक XYZ नया ब्रांड आया है, अब मुझे ये भी खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा जनरली,
मैं ये करूंगा कि 80 रुपीज का मैंने ये खरीद लिया, 20 रुपीज का ये खरीद लिया, मेरे पास पैसे बिल्कुल सेम था और मुझे ये लगा कि इससे भी मेरी क्या हो रही है, जो यूटिलिटी है वो उतनी ही सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये तो था सेम गुड्स के लिए, बट जनरली क्या होता है हम इसको डिफरेंट गुड्स में देखते हैं। कैसे? आप गए थे, आपको फ्रूट्स लेके आने थे, आपने क्या करा, 60 रुपीज के एप्पल ले लिए एंड 40 रुपीज का बनाना ले लिया, तो उस वो क्या है, दोनों के बीच में आप कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, सो लेट अस रीड द ऑप्शन फर्स्ट। द टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स कंज्यूम्ड इज इक्वल। ये तो नहीं हो सकता, ये तो क्या बोला, टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स कंज्यूम्ड इज इक्वल। प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इज द सेम, नो। कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल देयर इनकम ऑन इन ऑन गुड, ये तो हो ही नहीं सकता। मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। ओके, सो ये है मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। मैंने इसको कब खरीदा, जब मुझे लगा कि हाँ अगर मैं 20 रुपीज का गुड डे भी खरीदूंगा तब भी मुझे यही यूटिलिटी मिलेगी जो इसको खरीदने से मिल रही है। सो इट इज द शेयरिंग, है ना। मेरे को था कि मैं 100 रुपीज के फ्रूट्स खरीदने थे, तो मैं 100 रुपए के सेब खरीदता तो भी मेरे को उतनी यूटिलिटी मिलती जितनी मेरे को 40 रुपीज के बनाना खरीदने से मिलती। सो इट इज द हाउ वी आर डिवाइडिंग बिटवीन द टू डिफरेंट कमोडिटीज। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। Then next is the production function curve. Friends, this is very, very, very important. And this time I'm not taking much question from this. I'm taking only one question just to elaborate this thing. And what you have to do is after this session, I will share a PDF of more number of questions related to the marketing in the Telegram group also. And यहाँ पे मैं description box में भी link provide कर दूंगा, तो उसको आपको करना है, वहां पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ओके, so what is inflection point? So just see, this is the journey of any enterprise. Okay, when the production is zero, and ये क्या है, output है, and this is the input. When we are using the input, so this is output. So what happened initially, when we will use the additional unit of input, so there will be additional unit of output. अब ये कब तक होता रहेगा? So there will be a point जब तक हम जितना input डालेंगे उतना ही, या फिर exponentially there will be a growth. So production will increase with the increasing rate. But after a point, what will happen? Production will increase, but not at the previous rate of increase. Okay, so this is the point when we are saying this is the inflection point, means after which production will definitely increase, but with not with the increasing rate, but with the decreasing rate. Okay, so it is the point, what we can say, it is the point of diminishing return, or it is the point from where the returns started diminishing. Okay, so this is the point. And what we can say here, the marginal product, see this is the marginal product, it is marginal production is maximum, and average production is again increasing. Okay, how you can understand, you can understand with this particular table, but I am not explaining this time. If you want to understand this thing, I have discussed this thing in detail when I was taking the session for IBPS AFO agriculture economics. Okay, so I think second or third topic I have taken the agriculture economics in the IBPS AFO revision series, so you can refer to that those video. I have explained this thing in very detail. Okay, so I'm not increasing, but one thing you need to understand here is there are three zones. One is this zone, when the marginal, this zone is how we are delineating this, when the marginal product and the average product is same. Okay, then there is a second stage, and then there is a third stage. Third stage is when the marginal product is zero. Okay, third stage will start after that. So this is a rational zone, this is a rational zone, this is the rational zone. Why we are calling this rational zone? This may be the question. Many a time I have seen this question in the examination. This is irrational because at this particular time, whenever we are using the additional input, the additional output is there. तो हमें लगता है यार बढ़ाते जाओ इनपुट और आउटपुट बढ़ता जाएगा. बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है, व्हेन यू विल ऐड द इनपुट, इट विल नॉट इंक्रीज, रादर इट विल डिक्रीज. तो अब आपको पता चल गया ये तो नहीं करना, अब मेरे को नहीं बढ़ाना है इसके आगे, क्योंकि इसके आगे प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है. सो आप कहीं ना कहीं इस जोन में ही रहेंगे. सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रैशनल जोन. यहाँ तक तो क्या है, जैसे ही आप इनपुट बढ़ा डाल रहे हैं तो वो बढ़ रहा है, तो हम कहाँ पे होंगे, कहीं ना कहीं इस जोन में. सो दैट्स व्हाई दिस जोन इज नोन एज अ रैशनल जोन. ओके, so all these are the important point. The question may be asked from any particular point, है ना, कि जब marginal product कितना होता है तो average product कितना होगा, इस type से question पूछे जाते हैं. Okay, and there are assumption, technology remains constant, there should not be the change in technology. Some of the inputs remains fixed for the short run. Fixed proportion of factor is not possible, है ना, exchange वो नहीं होना चाहिए, substitution. Coming to the market type of questions based on the market, many sellers sell the homogeneous product and having no control over price or for the farm commodity is control is condition. Many sellers are selling.
the homogeneous product, same product, simple. You can try, take the example of potato. Homogeneous product is homogeneous, many sellers are selling, उसको हम क्या बोलते हैं? The condition is known as a perfect market condition. This is a perfect market condition. Okay, when one seller sells the product but the product have close substitute is called, only one seller is selling. Okay, only one seller is selling the Pepsi, है ना, पेप्सी एक ही सेलर बेच रहा है, बट बाकी मार्केट में पेप्सी कोई नहीं बेच रहा है, बट वो बंटे का सोडा, सोडा सिकंजी, इस टाइप की चीजें बिक रहे हैं. सो इसको हम क्या कहते हैं? वो अभी वो पेप्सी तो नहीं है, बट पेप्सी जैसा ही वो काम कर दे रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओके, सो इसको मोनोपोली मत मार के आना, दिस इज अ मोनोपोलिस्टिक. व्हेन द प्रोडक्ट इज, व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज नॉट देयर बट द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर देयर. मोनोपोली कब होती? व्हेन द वन सेलर इज सेलिंग द प्रोडक्ट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और वो प्रोडक्ट केवल एक ही सेलर सेल कर रहा है. What is the probable impact on supply when a technological breakthrough significantly reduces the time required to produce a certain product? अभी हमारे पास, हम समोसे बना रहे थे हाथ से बैठ के, है ना, तो हम एक दिन में 100 समोसे बना पा रहे थे. अभी एक टेक्नोलॉजी आ गई, वो 1 आवर में ही 1000 समोसे बना दे रही है. तो ये क्या हो गया? इससे क्या होगा? सप्लाई विल इंक्रीज ड्यू टू द रिड्यूस टाइम ऑफ प्रोडक्शन, है ना. ये सब सिंपल सी चीज है कि सप्लाई विल इंक्रीज विद द रिडक्शन इन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन. The demand goods which are related with the demands of other good is known as, simple question. This is very much used in the agriculture, क्योंकि आप देखोगे एग्रीकल्चर में एक चीज आपने ले लिया तो दूसरा आप लोगे. जैसे सिंपल सी बात है, मैं अपने दोस्तों को कई बार समझाता था कि अब तुमने अब चिकन ले लिया है ना, तो अब आप चिकन मसाला भी खरीद के लेकर आओगे. सो व्हाई? बिकॉज दीज आर द डिराइव्ड गुड्स. ये कैसी, इनकी ये कैसी डिराइव्ड डिमांड है. ओके, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विलेज मार्केट? ओके, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. आई हैव टेकन ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आई हैव टेकन अ सिंगल क्वेश्चन. तो अभी तक मैं जितनी चीजें डिस्कस करते आ रहा हूँ, आपको भी लग रहा होगा आई एम डिस्कसिंग द डिस्क्रीट थिंग्स, वेरियस टॉपिक्स आई एम कवरिंग. ओके, एवरी क्वेश्चन इज कवरिंग अ सिंगल टॉपिक. व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विलेज मार्केट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ मार्केट. ओके, देयर आर टाइप ऑफ मार्केट इन एग्रीकल्चर. वन इज द विलेज मार्केट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी आर आल्सो कॉलिंग इट एज अ प्राइमरी मार्केट. व्हाई वी आर कॉलिंग द प्राइमरी मार्केट? बिकॉज द प्राइमरी ट्रेड इज हैपनिंग हियर. So how many words we are using? Primary, trade also we are using. So village market, primary trading. So what is that primary trading? Because the transaction is happening between the farmer and between the trader. Primary trader हम इसको बोल सकते हैं. So why farmer? Farmer is a producer. ये प्रोड्यूसर था, ये अब क्या है? यहाँ पर से ट्रेडर्स हो गए, बेचने वाले. So what is the main characteristic of the village market? Transaction, major transaction among the city buyers and sellers. ये तो हो सकता है, but again it is not specifying. Transaction mainly between the producer and traders. Yes, producer और trader के बीच में है. Trader and trader के बीच में होगा तो फिर वो secondary market हो जाएगी. Okay, location in metropolitan cities not at all. Focus on the export of good. No, handling of commodities in large quantities. ये भी हो सकता है, but again this is not always the condition. So the apt answer is transaction mainly between the producer and traders. Okay. What distinguishes the secondary wholesale market? So now you can understand it very well. अभी क्या था? प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर के बीच में था, तो इट वाज द प्राइमरी मार्केट. ओके, अब जो सेकेंडरी मार्केट है तो वो क्या होगा? लोकेटेड इन द मेट्रोपॉलिटिकल सिटी, कहीं भी हो सकती है. सो वी कैन नॉट से कि दिस विल बी द कंडीशन. ट्रांजैक्शन मेनली इन्वॉल्व द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स. नो, इट विल बी प्राइमरी मार्केट. दे आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, वी कांट से दिस थिंग. ट्रांजैक्शंस कैन टेक प्लेस बिटवीन द विलेज ट्रेडर्स, नॉट between the producer but village trader and the wholesaler. Okay, so this is what, this is the secondary wholesale market. I think now picture is clear to you. Under what condition might the marketed surplus be more than the marketable surplus? This is the one of the favorite question. Okay, this numbering I have changed this time because I have added so many different type of questions. Okay, so don't go by the number. Under what condition might the marketed surplus be more than the marketable surplus? Okay, now you need to understand. Okay, marketable surplus is ability. Like, what is the ability? I am producing 100 quintal of something. Okay, and I have my own demand of 5 quintal. So how much I am able to sell? 95 quintal. Okay, so this is my marketable surplus. Marketable, this is my ability to sell in the market. Okay, but due to some distress, or we can say some cash obligation, I sold everything 100 क्विंटल. मैंने कहा अभी बेच देते हैं, बाद में खरीद लेंगे. So ये क्या है? Marketed. What actually I marketed? I, again this may be a condition. अगर मेरे पास डिस्ट्रेस नहीं है, मेरे पास सरप्लस है, so I will sell only the 50 quintal. So again this is what, this is the marketed, how actually I sold in the market. Okay, this is the thing. Marketable means how I can sell in the market, or marketed surplus is how actually I sold in the market.
Okay, so this is the difference. So under what condition they are asking, might the marketed surplus be more than the marketable? मतलब marketed surplus is more. So ये कौन सी condition है? It is the distress condition. Okay, distress or the forced sale condition, which is forcing me to sell everything. Okay, in which what situation might the marketed surplus be less than the marketable surplus? So just I told you कि it may be the condition of surplus. Okay, I have surplus. My cash obligation, cash requirement is getting fulfilled after selling 50 quintals. So I will hold 45 quintals. I will sell when the price will rise. So ये क्या है? This is the condition of large farmer. They are retaining their surplus. Okay. In the marketing mix, what does the place refers to? The four P's हम बात करते हैं. Four P's. So what does the place refers to? Place क्या है? So it is the physical location of company? No. It is the distribution channel used to make the product available to the customer. Variety of product, promotional activity, or the manufacturing process of the product. ये क्या है? What is the place? Now you have to tell me. Okay. अभी ये option भी यहाँ पे दिया हुआ है, answer भी यहाँ पे दिया हुआ है. You have to tell me in the answer. Okay, in the chat box. What does the government aim to achieve in the agriculture marketing? So you know it very well, government is not directly associated in the agriculture marketing, but many a time like the cci is related to the marketing of agriculture, marketing of cotton. NSC is production and marketing of seeds. So what is the aim of government to do? है ना? अभी सीसीआई क्यों लगा भाई? इसको कॉटन को तो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा ना. जब मार्केट में डिमांड है तो कॉटन तो कोई और भी खरीद सकता है. गवर्नमेंट क्यों लगी हुई है? सिमिलरली शुगर मिल, एमएसपी वगैरह, ये क्या है? Why government is interested in doing the agriculture marketing? They read the options. Providing maximum income to the market middleman. No, भैया ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. Safeguarding interest of producer and consumer. So again, this is kind of apt answer. Encouraging farmer to exit the trade, no. Reducing the quality of fruit, no. Minimizing the share of producer in the consumer opinion, no. So it is the safeguarding the interest of producer as well as consumer. From the consumer point of view, inflation is an important thing है ना, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए. From the producer point of view, उनको उनका return मिलना चाहिए है ना. Farmers के अपने concern है, consumer के अपने concern है. So this is the marketing. So I have discussed and touched various different type of diverse topics, and I hope this will be helpful for you in your examination. What you have to do, I will also provide you the additional PDF with more number of questions. You must go through that also. Okay, why is marketing of agriculture commodity considered different from the manufactured good? So now you can answer it. Marketing of agriculture commodities considered different from the manufactured good. सिंपल सी बात है कि मतलब आप ये देखो, कोई भी कपड़े हैं या फिर कोई भी ऐसा गुड है जो जिसकी स्टोरेज लाइफ है, वो एग्रीकल्चर कमोडिटी से कैसे डिफरेंट है? सिंपल सी चीज है. देखो, यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये हम नहीं कह सकते हैं. पेरिशेबिलिटी एंड सीजनलिटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर कंसर्न, है ना. मैन्युफैक्चर गुड्स के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ये बहुत बड़ा एक सीजनलिटी का कंसेप्ट रहता है, जिसको हम पेरिशेबिलिटी बोलते हैं. सो पेरिशेबिलिटी एंड सीजनेबिलिटी इज द मेजर फैक्टर. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फंक्शन इन द मार्केटिंग? सो दिस वी हैव डिस्कस्ड. सो आई थिंक एवरी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. Answer this question in the comment box and I will check. Okay, what advantage does the cooperative marketing provide in terms of credit facilities to the farmer? What advantage does the cooperative marketing is providing? Cooperative marketing क्या provide कर रही है? Bulk transport of agriculture produce, direct dealing with the final buyers, provision of input and the consumer goods, easier and the cheaper transport, provides credit to save farmer from the immediate selling. So again, this is the important part because वो क्या बात कर रहे हैं? Cooperative marketing से related है. Okay, it is related to the cooperative marketing. Okay, so this is all about the agriculture marketing. I hope कि जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे, and I tried to discuss the question from the diverse topics, and for maximum number of question you can attempt the chapter test, and I will also share a PDF of the questions related to the agriculture marketing. Do well, students, and try to clear this examination. Remind yourself that you will clear this examination this year. This is all for today. Thank you for watching this video and have a great day.